Hello, everyone. I hope now I'm properly live, audible, and visible. Hello, everyone. I think I am. Okay. I think everything seems to be fine. Good to go things. Sure. So let's start what we are having. Yeah, we know, like, I know we are a bit late, but we can cover. So let's not be tensed about it. Right. Okay. So what happened in last like one day अगर बात करें तो AI summit जो है India AI summit that has already been started and the first day was a bit of mismanagement. Hi Daksh, good morning. There was some particular mismanagement relevant to the timing, some VIP protocols, कुछ चीजें चोरी हो गई, कुछ अदर थिंग्स जो है वो निकल के आई. सो ओवरऑल जो है वो एआई इम्पैक्ट समिट की स्टार्टिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है. बट यस, वी बिलीव कि जल्दी से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी. एंड आई थिंक मिनिस्टर जो है उन्होंने अपनी बात रखी भी है कि यस वी नो देयर वाज सम मिसमैनेजमेंट, हम उसको ठीक कर लेंगे. फिर सेकंड बिग न्यूज़ वाज लाइक दिस पर्टिकुलर पब्लिक स्पीच एंड पब्लिक स्पीच में जो पर्टिकुलर पॉलिटिशियंस हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, दे आर सपोज टू मेंटेन सर्टेन डेकोरम, कॉन्स्टिट्यूशनल व्हाट वी कैन से फंक्शनरी, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज विदाउट लाइक गेटिंग इनटू दिस कि हाँ भाई आप कुछ भी बोल दो. सो दिस इज वन थिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बात की है. दैट इज द न्यूज़ जो आपको फ्रंट पेज में दिखेगी, है ना. यस, उन्होंने सीधे तौर पे डिस्क्रिमिनेटरी एंड कम्युनली डिवाइसिव स्पीचेस जो है स्पीचेस जो है उनको कम करने की बात करी. इट्स अ गुड पॉइंट. कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रही है. सेकेंड थिंग इज द बिगेस्ट न्यूज ऑफ टुडे वाज इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. यस, अगेन इंडिया फ्रांस के बीच में जो डिफेंस जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको 10 साल के लिए रिन्यू किया गया. राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो एआई का वाला बात है अपन ने करी ली थी. फिर एक डिफेमेशन केस राहुल गांधी के अगेंस्ट आया था कर्नाटका हाई कोर्ट में. एंड दैट डिफेमेशन केस इज बीइंग कैंसिल्ड. like they said कि there is what we can say procedural lapse. So राहुल गांधी और डिफेमेशन केस ये कंटिन्यू एक इशू बनाई हुआ है. Just a minute. Then the next one was before election, Assam government decided to give like 3% reservation to worker. Yeah, right. Yes. Then अरे हाँ दक्ष आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं. ईरान एंड यूएसए आर इन टॉक्स. आगे उनकी रिलेशन जो है जो भी डिस्कशन है वो आगे बढ़ा है कुछ कुछ. तो देर आर गुड नंबर ऑफ न्यूज. द प्रॉब्लम इज जो भी कल की न्यूज में थे वो मेजरली एआई इम्पैक्ट समिट से क्या हुआ डोमिनेटेड था. एंड एआई इम्पैक्ट समिट में जो चीजें हुई दैट वाज आल्सो समथिंग जो कि सही नहीं था. दिस इज वन पर्टिकुलर पर्सन जो बैंगलोर से वहां गया था, वहां पे उसके लैपटॉप वगैरह रख लिए गए, सारी चीजें कि भाई प्रोटोकॉल्स है, पीएम आ रहे हैं. एंड देन व्हेन ही केम बैक सारी चीजें उसके सारे इक्विपमेंट्स जो हैं गायब थे. तो देयर वर टन्स ऑफ डिफरेंट पर्टिकुलर इश्यूज जो कल आए. बट आई बिलीव कि जल्दी से ये सारी चीजें जो है वो ठीक कर ली जाएंगी. तो वही चीज हो रही है. नाउ लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट न्यूज फॉर टुडे. दैट इज पॉलिटिशियंस ऑफिशियल मस्ट फॉस्टर fraternity, said Supreme Court. Yes, first thing they said कि we are noticing the statement of divisive language, discriminatory governance हमें देखने को मिल रहा है. And the Supreme Court also said that we are going to restrain the public comment by the constitutional post. And 75-year-old democracy, uh, we do not have like expect people to behave like this. So that is something a very what we can say critical comment कि भाई 75 साल हो गए डेमोक्रेसी को और अब हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि लोग ऐसा बिहेव करेंगे. राइट. तो
चीफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जो जस्टिस बीबी नागरत्ना है एंड जस्टिस जॉयमाला बख्शी, इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि इलेक्शन शुड बी फॉट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ना कि इस तरीके से कि आप कुछ भी बात करो. Right. So political leaders, whether the constitutional functionaries, they are supposed to have a proper particular, what we can say, language, not divisive language, but to unite country in some other particular aspect. उन्होंने बात की थोड़ा थोड़ा करके वो करते हैं पूरा लाइव उन्होंने काफी अच्छे से वो किया था. काम वो किया था. सो जो फ्रेटर्निटी और पब्लिक स्पीच है उसके कुछ उन्होंने की ऑब्जर्वेशंस जो है वो बात करी. तो सबसे पहले उन्होंने बात किया कि रिस्ट्रेंट फ्रॉम ऑल साइड. यस, अगर मैं कमेंट की बात करूं तो उन्होंने बोला द कोर्ट नोटेड दैट देयर मस्ट बी अ रिस्ट्रेंट इन स्पीच फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल फंक्शनरीज रिगार्डलेस ऑफ आइडियोलॉजीज. एंड स्पेशल रिमार्क जो जस्टिस बीवी नागरत्ना का था, उन्होंने ये बोला दी दैट origin of speech is a thought, suggesting that thought must be aligned with constitutional value to prevent toxic discourse. So उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि भाई साहब सारी पार्टीज, whether you are like बीजेपी, कांग्रेस और एनी अदर पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, आप सबको ये जो स्पीच है उसको रिस्ट्रेन करनी पड़ेगी. देन द नेक्स्ट थिंग दे मेंशन वाज अकाउंटेबिलिटी. यस, उनका सीधा कहना है, इस पर चीफ जस्टिस ने कमेंट किया था, द पब्लिक सर्वेंट्स आर ऑलरेडी बाउंड टू एग्जिस्ट लाइक बाय एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स such as all India services rule, and warned against the casually drafted plea that do not consider establishing the legal wealth like this. उन्होंने ये भी बोला कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रोल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. दे शुड बिहेव इन सच अ फैशन कि जहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने का मौका मिले. दे शुड इन द पब्लिक डोमेन दे शुड नॉट बिहेव इररिस्पॉन्सिबली. सो लीडर्स हों या अदर जो पर्टिकुलर वो हों, क्या कहना चाहिए, ऑफिशियल्स हो, दे शुड बी वेरी मच क्लियर व्हाट दे आर सेइंग. सो उन्होंने काफी चीजें वो किया. अब ये पिटिशन थी, अगर उसकी बात करें तो एक एकेडमिशियन है, दैट इज रूप कुमार वर्मा, रूपरेखा वर्मा, सॉरी, है ना. सो रूपरेखा वर्मा ने इस पर्टिकुलर डोमेन, इस पर्टिकुलर पीआईएल को लगाया था, जहां पे उन्होंने ये बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं उनकी पब्लिक स्पीचेस जो है उनको कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन किया जाए. फिर उन्होंने ये भी बात बोली कोर्ट ने कि भाई साहब आप सिलेक्टिव टारगेटिंग करते हो, and which is not right. Remember that Himanta Vishwa Sarma video? So they clearly mentioned that they are entertaining this PIL in current form, observing that it appeared to be selectively target individual from the particular political party while ignoring others. तो उन्होंने बोला कि इस फॉर्म में हम पीआईएल को वो नहीं करेंगे. We need to talk about it. We can talk about it. Then they mention about the neutrality of the nature of the speech, कि ये किसी भी एक रिलीजन की तरफ बायस नहीं होना चाहिए, and some other. Now, what exactly happened from last few years, हमने देखा है कि देश भर में अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग जगहों पे इलेक्शंस चल रहे होते हैं. So whether that is state election, whether that is central election, or sometimes the civic body election, right? And every other elections, like you cannot even imagine, like yesterday there is this particular MLA who was saying I'm 50-year old and I can cut 10 people from a specific origin of religion. Yes. So this kind of speech from any individual जो कि MLA, MP या किसी civic body में, this is something जो not welcoming है. और ये होता भी है. इस इलेक्शन के पहले these kind of speeches from last few years have been seen a significant increase. तो अगर ऐसा होता है और इस पे कुछ रिस्ट्रेन लगता है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, तो डेफिनेटली इट कैन हेल्प इंडिया getting a better and fair election. Like talk about what work you do, right? Yeah, what work you did in the last 5 years, and like the opposition make still what work they will do in the next 5 years. That is better, like irrespective of targeting some community.
like this, that is a better option, right? So अच्छा है कि निकल के आ जाए ये पर्टिकुलर चीज। देन सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप इज अ फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी से प्रधानमंत्री मोदी। यस, सो इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो लाइंड अप हुआ है एंड फॉर द नेक्स्ट 10 years। सो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि हमें कवर करनी चाहिए। इंडिया फ्रांस डिफेंस कोऑपरेशन करते हैं, उस पे भी करते हैं दक्ष। Everybody is using machinery for some reason. The thing is, it's not Chat GPT or it's not any AI, which is actually what we can say. Like AI cannot be biased. It's about the data that is being fed. राइट, सो जो अवेलेबल डेटा होता है उस पे एआई काम करता है। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, मतलब वो वहां से आता है। मैं अभी बात करते हैं पहले इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया फ्रांस डिफेंस कोऑपरेशन पे बात करता है। सो भैया तुम्हें पता होगा कि जो एनिमल वो है, एमिनल मैक्रोन है, वो फिलहाल के टाइम पे इंडिया में है, राइट। एंड उन्होंने 10 साल के लिए जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको वो क्या कहते हैं, उसको रिन्यू किया है। सो अगर मैं बात करूं तो दे हैव अपग्रेडेड द बाइलैटरल रिलेशनशिप टू अ स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, right? And this is going to the both nations renewed their 10-year defense cooperation agreement, signed over 20 agreement focusing on co-design, co-development, co-production of a military platform। तो 10 साल के लिए उन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन रिन्यू भी किया है एंड प्रोडक्शन जो है उसकी बात की है, विच इज लाइक को प्रोडक्शन। सो दोनों के दोनों कंट्रीज मिलके प्रोड्यूस करने वाली हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द रीसेंट एग्रीमेंट और उसके क्या टर्म्स एंड क्या दूसरी चीजें हैं। सबसे पहला जो है वो है 114 रफाल। Yes. So, India's Defense Acquisition Council, they have approved the procurement of 114 Rafale jets for the Indian Air Force, in which India has requested these 50% indigenous content, expanded maintenance facility within the country। कि वो ये चाहते हैं कि हम 50% यहीं असेंबल करें, बनाएं और हमारा मेंटेनेंस यहीं पे हो। सो 114 रफाल जेट, दैट इज द फर्स्ट डील। सेकंड, हैमर मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग। Yes, this is good. Like, no, this is not a, like exact agreement, but it was a memorandum of understanding that was signed by the joint venture of Bharat Electrical Limited and the Safran Electronics and Defense to manufacture hammer missile in the India. Hammer missile is something जो स्ट्रेटेजिकली फाइटर जेट से भेजी जाती है, मतलब क्या कहना चाहिए, शूट की जाती है। एंड दिस इज समथिंग जो काफी एक्यूरेटली टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। तो यस, अगर हेमल मिसाइल इंडिया में बनती है, दिस इज अगेन नॉट एन एग्रीमेंट बट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू कंट्रीज सो दैट दे कैन मैन्युफैक्चर हेमल मिसाइल इन इंडिया। बट अगर बनती है तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड व्हाट वी कैन से deal for us, right? The next one is H125 helicopters। यस, मैक्रोन और मोदी जी जो हैं इन्होंने मिलके वर्चुअली इनॉग्रेट किया है H125 फाइनल असेंबली, लाइक हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली इन द वेमगल कर्नाटका, राइट। हाँ, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर जो 2027 से प्रॉपरली सेल आउट होना, बाहर आना शुरू हो जाएगा। Then they also talk about the Scorpion class submarine। Yes, जो उनके ओरिजिनल P75 प्रोजेक्ट्स थे जिसमें अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वो रन करना चाहते थे, दे ऑल्सो रन डाउन टू negotiate on the 3 Scorpion class submarine to be built in Mazagon dock, जो कि कहीं ना कहीं फ्रेंच सपोर्टेड होगा। तो सबमरीन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, जेट्स, इन सारी चीजों पे डील हुई है। फिर इसके बाद उन्होंने कुछ ऑपरेशनल कंट्रोल, ऑपरेशनल जो स्ट्रेटेजी है उसको भी सेट किया है।
So there is going to be a reciprocal development. Both country announced that the development of what we can say, uh, क्या कहना चाहिए, डिप्लॉयमेंट ऑफिसर्स, रेसिप्रोकल डिप्लॉयमेंट ऑफिसर्स जो है, राइट, उनका भी एक पर्टिकुलर स्टैब्लिश्ड ऑपरेशन सेंटर होगा जिसमें दोनों कंट्रीज के ऑपरेशन हेड जो है वो करेंगे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होगी, एंड डिफेंस R&D होगा, इंडो पैसिफिक जो पार्टनरशिप है उस पर एनहांसमेंट होगा। तो नॉट ओनली डिफेंस प्रोडक्शन बट ऑल्सो दी स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, इन दोनों पे काफी लंबी चौड़ी एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं। हाँ, एक बहुत बढ़िया बात जो है, दैट केम फ्रॉम द एनिमल मैक्रोन, उन्होंने जो बात बोली थी, दैट इज अ वेरी गुड व्हाट वी कैन से स्टेटमेंट जिसमें थोड़ा सा पॉजिटिव वो दिखता है। They said India and France are bound together for the industrial and technological integration. So whether that is defense and other industries, we can move forward for our our profit, our welfare. तो उन्होंने जेट इंजन टेक्नोलॉजी है, एमआरओ फैसिलिटी है, डिफेंस एंड स्पेस कोऑपरेशन है, देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस जहां पे देयर इज अ स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, उसको भी उन्होंने टिक मारा, राइट। तो ये एक अच्छा व्हाट वी कैन से आउटकम है इन दोनों मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड द थिंग इज कि जिस तरीके से इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग एटलीस्ट द मोदी एरा, they have been very good allies. We cannot say they are very good friends, but they are very good allies. Different जगहों पे दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट भी किया था। They together proposed and now running international solar alliance। तो आगे हम देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन का one of the finest one of the best defense power is like favoring India। तो आगे चल के ये चीज कहीं ना कहीं इंडिया को हेल्प करेगी। ठीक है। यस। अब आगे बात करते हैं, need a global cooperation to tackle AI bias risk, tech must remain human centric। मोदी जी, ये मोदी जी का स्पीच जो था एआई समिट में उनका उसका पार्ट है। उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं एआई माइंड्स को सपोर्ट करेगी, इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देगी, इंक्लूसिव ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देगी, बहुत सारी उन्होंने स्पीच में बात की। दो, राइट, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी कह रहा हूँ, we are like 2-3 year behind the world for this summit। India is IT hub, right? दुनिया भर की countries को हम पता है कि हम IT hub है, but we are not having a single like major AI जो दुनिया भर में recognized हो। तो ये 2-3 साल हम पीछे हो गए हैं, but I believe Indians are having potential कि वो बाकी सारी चीजों को काउंटर करके आगे निकल जाएंगे। तो let's hope for the best। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैं आईटी के, ही एक्चुअली अपोलोजाइज फॉर द समिट ट्रबल। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो केओस के फॉर्म में देखी, उन्होंने बोला कि वी विल इम्प्रूव इट। ठीक है। नाउ कांग्रेस प्रोटेस्टेड विद बॉटल्स ऑफ contaminated water in MP, at least 5 years behind, we have nothing to put on the table। that's okay। like इंडिया काफी जगहों पे काफी पीछे रही है, बट वी एक्चुअली हैव अ स्ट्रेटजी, हैव अ टेंडेंसी कि हम कोप अप कर लेते हैं, whether that is स्पेस प्रोग्राम। अभी हम डिफेंस में भी काफी एग्रेसिवली आगे आ रहे हैं। तो ओवरऑल फैशन में आई आई बिलीव हम लोगों को पीछे कर देंगे, राइट। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन कि कोई ऐसा देश नहीं है जिसने 10,000 करोड़ प्लस जो है सिर्फ एआई के लिए अलॉट किया बजट। देन आई showed him some particular figures। Like there are single companies which are investing 12, 13, $15 billion for the AI development, और हम अभी उसमें बहुत कम है, पीछे हैं। सो अभी तो एक लंबा चौड़ा वो देखना है हमें। आईटी कंपनीज जो हैं इंडिया की, दे आर हैविंग लाइक 45-50 years of experience, and I believe they are going to like win the race very soon। सो भैया, कांग्रेस के जो एमएलएज हैं उन्होंने पानी गंदा पानी लेके प्रोटेस्ट किया। आई नो द प्रॉब्लम, राइट। फाइनेंस मिनिस्टर अवॉइड पॉपुलिज्म इन तमिलनाडु, एंटरिंग बजट फ्लैग्स फिस्कल स्ट्रेन। सिंपली लाइक
जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु इज अ स्टेट जो काफी ज्यादा टैक्सेस देता है, बट उनको जो ग्रांट्स और जो पर्टिकुलर रिवर्स में मिलता है वो कम होता है, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, राइट, कि जो रेवेन्यू है वो हमारा कम हुआ है, and we are having like other problems, we are having some schemes to run, and वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हमें इग्नोर करती है, सो कहीं ना कहीं ये फेडरल स्ट्रक्चर का वॉयलेशन है, तो उसकी बात की। असम ने 3% कोटा जो है वो ट्री ट्राइब्स के लिए रिजर्व कर दिया जॉब्स में। इलेक्शन है क्या? यस, इलेक्शन है, राइट। तो इलेक्शन के पहले इन्होंने बोल दिया कि हम 3% जो है वो रिजर्वेशन देंगे। मोस्ट प्रोबब्ली इट्स गोइंग टू बी चैलेंज्ड, दैट्स फॉर श्योर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Good news. Gujarat passes a bill permitting a night shift for women in shops. Yes. So, जो particular नया bill है, that is Gujarat Shop and Establishment Regulation of Employment Condition of Services Act 2019. उसमें एक amendment किया गया है. And now we can see the women workers working on the like in night on the regular shops. तो नाइट शिफ्ट के लिए बिल जो है वो पास कर दिया गया। एंड भैया बंगाल में इलेक्शन है, बीजेपी रिटर्न्स टू रथ यात्रा मूव टू बूस्ट द प्रोस्पेक्ट्स। सो बंगाल इलेक्शन है एंड बीजेपी ने रथ यात्रा किया। रथ यात्रा इज अ फॉर्म, एम आई नॉट क्लियर, लाइक ऑडियो इज नॉट क्लियर। रथ यात्रा जो है उसने बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदे दिए। सो वेदर दैट इज 1988 89 की जो आडवाणी जी की रथ यात्रा हो, जिस जो राम मंदिर के लिए बनाई गई थी, सेट की गई थी। Apart from this, the next few years of election, next few election, we have seen different रथ यात्रास for different reason, चाहे शिवराज सिंह हो चाहे मोदी जी हो। सो रथ यात्रा ने बीजेपी को काफी वो किया है, हेल्प किया है, सो अगेन दे बैक टू द रूट्स और उन्होंने रथ यात्रा जो है उसको शुरू किया। नाउ फिर नेक्स्ट वन इज बेंगलुरु से कुछ 21.5 करोड़ के ड्रग्स सीज हुए हैं। बेंगलुरु इज एन आईटी हब, सो आई डोंट सी कि इस तरीके की चीजें क्यों होती है, बट ठीक है। So ED questions actor Jairam in Ayappa Temple Gold case. So Ayappa Temple Gold case में जो जोनल ऑफिसर है ईडी के, उन्होंने एक्टर जयराम को क्या किया है, समन किया है कि भाई आओ और कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। Valentine bloom 60 million roses, that is 6 crore roses flown out via Bangalore airport. सुनो मतलब समझ रहे हो, मतलब क्या बोलना चाहिए, कुछ 27,000 टन, right, from 26 domestic flight, sorry, international flight and 47 domestic flights के थ्रू 6 करोड़ गुलाब पहुंचाए गए लोग। मैं सोच रहा हूँ गुलाब उगाना शुरू कर दूं। खैर, PDP seeks, that is People's Democratic Party, all party meeting in Jammu Kashmir over the Apple trade impact. क्या यूएस इंडिया ट्रेड डील से एप्पल ट्रेड को इम्पैक्ट हो सकता है? The answer is yes. The deal is in such a fashion that it's going to impact in a positively or negatively at all the sectors. और Apple Trades में भी ये चीज होने वाली है। And Apple Trade is a kind of major aspects of Jammu Kashmir economy. So they want an all-party meeting where they can discuss and then they can decide what to do, what not to do. Right? So Mamata Banerjee again terms election commission as Tughlaqi. चल रहा है भाई, ये चलता ही रहेगा। Okay, so we have discussed this already. Congress DMK together in the fight against the fascist forces, says KC Venugopal. So Tamil Nadu में election है and election के time पे there are people who are telling that there is a dispute and like fight over seat dividing, right, between India, Congress and DMK. But they said कि we are in together, like together in this fight against the fascist forces. तो एक अच्छा वो है ना, आईटी मिनिस्टर अपोलोजाइज, ये हम बात कर चुके हैं, राइट। क्या हुआ कल पूरे दिन ट्विटर में यही चल रहा था। सो द एंट्री स्टार्टेड एट 9, बाय द 12 पीपल सेड कि भैया नो, बोला कि आप बाहर जाओ, मोदी जी आ रहे हैं, देयर इज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। I mean, this was an AI summit, and people were not allowed to carry laptop, mobile, earbuds, watches, water bottle.
So people were asking question and like, what kind of summit is this? Is this AI summit or some like we came for budget? And then there was no food stall over there. So it was a huge, what we can say, chaos. फिर 2 बजे के आसपास मोदी जी को आना था तो 12 बजे से उनको हटा दिया गया पब्लिक को एंड 4-5 बजे तक पब्लिक बाहर थी जब तक मोदी जी अंदर थे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो जो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ही सेड कि यस वी नो देयर इज अ chaos देयर इज अ प्रॉब्लम बट वी आर गोइंग टू मैनेज इट सून राइट तो कहीं ना कहीं पहली बार किसी ने एक्सेप्ट तो किया कि देयर इज अ मिसमैनेजमेंट खैर कांग्रेस टू मीट स्टेट लीडर्स टू प्लान स्ट्रेटजी अगेंस्ट यूएस ट्रेड डील दिस इज गुड Puri must clarify 62 emails and 14 meetings with Epstein, says Congress. कुछ नए डिटेल कुछ नई फाइल्स भी रिलीज हुई हैं in which overall 62 emails were exchanged between Geoffrey Epstein and Central Petroleum Minister Hardeep Singh Puri. And there were 14 occasions when he met with Geoffrey Epstein. Congress is aggressively on it, and they want to like apologize. They want Hardeep Singh Puri to step down from the post. Let's see. मणिपुर में भैया ओके दैट्स गुड सो अगेन मणिपुर में लड़ाई झगड़े फिर से शुरू हो गए हैं राइट यस कुकीज मैथीज एंड सम अदर वन so there was this Sabaha Navodaya Vidyalaya where like in a Naga dominant district जहाँ से 51 students को evacuate किया गया है which belong to the cookies तो है let's hope for the best. Next is a shocking news. Black box of a plane that crashed killing Ajit Pawar was damaged. Yeah, like black box is that particular what we can say equipment in an aeroplane which is so strong that 99.9% in cases in the plane crashes it was the black box which never get damaged, but it was a small private jet uh, right, which was crashed in Baramati, right, Learjet 45 in January. तो वो like उनका कहना है कि because of intense heat the black box faced it was damaged. तो ये थोड़ा सा अभी you will see you are going to see tons of conspiracy theories that is going to run around कि भैया ब्लैक बॉक्स को डैमेज करने के पीछे का रीजन यही है लोगों को पता ना चले ऐसा वैसा बट आई डोंट थिंक कि दिस इज गोइंग टू बी इंटेंशनल ओके चले बिजनेस में पूरा का पूरा एआई वो था अच्छा ये दोनों जो है ना ये दोनों आर्टिकल एडिटोरियल पढ़ लेना हाँ दे आर गोइंग टू बी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे बिजनेस न्यूज में भी एआई छाया रहा देयर आर सम पर्टिकुलर गुड न्यूज भैया जिसको भी विटारा पसंद है ना वो ई विटारा जो है वो लॉन्च हो गई है दैट इज 10.99 लाख तो तुम ले सकते हो एआई मिशन 2.0 विल हैव जीपीयूज दैट इज व्हाट वी कैन से क्या बोलते हैं इसको ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो है ना वो ज्यादा हो जाएंगे कॉमन कंप्यूटिंग के लिए इंडिया गेट्स फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर हम बात कर चुके हैं उसकी अडानी जी कमिट्स 100 बिलियन टू बिल्ड एन एआई रेडी डेटा सेंटर तैयार हो जाओ है ना इंडिया मस्ट मॉप अप $500 बिलियन a year फॉर द नेट जीरो गोल जिस तरीके से हम नेट जीरो की टारगेट कर रहे हैं 2070 तक राइट हमें नेट जीरो के लिए $500 बिलियन जो है वो करने पड़ेंगे नहीं तो नहीं होगा खैर क्या कर सकते हैं ओके इट वाज अ सैड न्यूज मतलब टॉम हिगन का कैरेक्टर प्ले करने वाले जो रॉबर्ट डूवल थे जिन्होंने गॉडफादर अपोकलिप्स जैसी ग्रेट फिल्में की हैं ही डाइड at the age of 95 he was one of my favorite actors I felt bad Russia Ukraine sat down for a new round of US led talk to end the war this is the first time we got a news in which they are not talking about ceasefire
They are talking about a talk that is mainly going to focus on ending the war. That's a positive news. Tariq Rahman, shown as a Bangladesh PM, Iran and US agrees to guiding principle for the future discussion. So ये दोनों बैठ चुके हैं टेबल पे डिस्कशन करने के लिए कि भाई किस तरीके से पीस हो सकती है. सो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, राइट, उन्होंने एक जनरल एग्रीमेंट गाइडलाइन जो है उसको प्रोसेस किया, प्रिंसिपल्स प्रोसेस किए कि भाई हम किस तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं विथ यूएस. तो जेनेवा में बैठ के उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बातें की. लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी इनकी बीच में शांति हो जाए. Bangladesh reform agenda wins voters backing, but rift remains among parties. जी हाँ, so BNP, which is now in a ruling, that is Bangladesh Nationalist Party, and Jamaat-e-Islami, JEI, which is opposition party. So there is this particular thing in Bangladesh, जिसको हम जुलाई चार्टर कहते हैं. July Charter had proposed, like, I guess, 47 constitutional amendment and नहीं 37 constitutional amendment और शायद 47 legislative amendment. So overall fashion में कुछ 100 के आसपास amendment होने थे. And that is the reason people actually voted and they wanted PNP in power. But for now, it doesn't seem like कि दोनों के दोनों parties एक चीज पे agree हो पाएंगे. Because this is going to be constitutional amendment, so they will need two-third majority. Though BNP has that two-third majority, but there are certain points जिसमें BNP भी एग्री नहीं करेगी. तो यही बात हुई है कि भाई साहब इन पार्टीज के बीच में लफड़े चल रहे हैं. As critical minerals become strategic asset, US looked realign the supply chain. पढ़ लेना कि भैया क्यों ये ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है, चाचा. So that's it. स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है, आज मैच है. So ready for question answer? Yes or no? Good. Let's move to the first one. Supreme Court emphasized the political leaders must foster which constitutional value. सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया है कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को फॉस्टर करें. लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म. यस, वेरी गुड दक्ष. द करेक्ट आंसर इज फ्रेटर्निटी. हमने बात की कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हैं, दे शुड नॉट टॉक अबाउट डिवाइसिव पॉलिटिक्स ऑफ पब्लिक, whether they should talk about fraternity. Next question. The petition before Supreme Court highlighted the issue relating to. जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन थी उसने कौन सा इशू जो है उसको हाईलाइट किया. इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस, हेट स्पीच एंड डिस्क्रिमिनेटरी पब्लिक स्टेटमेंट, जुडिशियल. ओहो, आंसर ही लिखा हुआ है यार इसमें. मैंने सब में तो आंसर कॉपी नहीं कर दिए. नहीं, हेट स्पीच एंड डिस्क्रिमिनेटरी पब्लिक स्टेटमेंट्स, राइट. यस, इसी पे बात हुई है. चलो लेट्स मूव टू द, सॉरी सॉरी. इंडिया और फ्रांस एलिवेटेड देयर रिलेशनशिप टू विच स्टेटस. इंडिया और फ्रांस जो है उन्होंने किस लेवल पे अपने नए जो पर्टिकुलर स्टेटस हैं, म्यूचुअल बायलैटरल एग्रीमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स हैं, उसको किस लेवल पे एलिवेट किया. स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक अलायंस, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पैक्ट. ओके, दक्ष कहना है ए, दैट इज स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप. अभी, अच्छा, अभी ने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, दैट्स मैंने फ्रेटर्निटी का आंसर किया. Guys, the correct answer is Special Global Strategic Partnership. Remember we had this discussion, है ना, जिसपे हमने बोला भी है कि भाई साहब स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो वहां पे आया है ना. डिफेंस उसके अंदर है, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पैक्ट उसके अंडर है. ठीक है, चले नेक्स्ट. The amendment of a double taxation avoidance agreement DTAA between India and France primarily relates to, राइट, जो डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट एग्रीमेंट है वो इंडिया फ्रांस के बीच में किस चीज से रिलेटेड है. एनवायरमेंटल कोऑपरेशन, ट्रेड टैरिफ रिडक्शन, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑन इनकम, डिफेंस प्रोक्योरमेंट.
बताओ। द करेक्ट आंसर इज सी। यस। डबल मतलब इधर भी उधर भी दोनों जगह टैक्स लगे इनकम में, इससे बढ़िया है कि उसको अवॉइड किया जाए। सो दैट इज व्हाट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्नाटका हाई कोर्ट quashed the criminal defamation case against Rahul Gandhi primarily due to। कर्नाटका हाई कोर्ट ने राहुल गांधी अगेंस्ट डिफेंस डिफेमेशन केस को कैसे खत्म किया, किस चीज पे? लैक ऑफ टेरिटोरियल jurisdiction, procedural lapse and absence of proper evidence, withdrawal by complaint, expiry of a limitation period। बताओ। द करेक्ट आंसर इज बी, प्रोसीजरल लैप्स। उन्होंने यही बोला कि भाई देयर इज अ प्रोसीजरल लैप्स एंड एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एविडेंस। उन्होंने एक रिमार्क मारा था कि कर्नाटक का गवर्नमेंट 40% का गवर्नमेंट है, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ चीजें जो है 40% कट पे होगी जाती है। Yep. Under Article 326 of Constitution of India, the right to vote is based on अनुच्छेद 326 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वोट करने का अधिकार किस चीज पे बेस्ड है? प्रॉपर्टी ओनरशिप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या टैक्स पेमेंट? बताओ किस बेसिस पे हमें राइट टू वोट मिलता है? वेरी गुड, दैट इज सी, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Gujarat Shops and Establishment Amendment Bill 2026 allows women to। गुजरात शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 महिलाओं को अलाउ करता है वर्क विदाउट वीकली हॉलीडेज, वर्क नाइट शिफ्ट्स एंड विद सेफगार्ड्स, ऑप्ट आउट मैटरनिटी बेनिफिट्स, बी exempted from the labor laws। वेरी गुड अभी। वेरी गुड तब। द करेक्ट आंसर इज बी। यस, वर्क नाइट शिफ्ट विद द सेफ गार्ड, यही तो चेंज हुआ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑपरेट अंडर विच लेजिस्लेशन? ईडी या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो किस लेजिस्लेशन के अंडर ऑपरेट करती है? इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दैट इज PMLA, कंपनीज एक्ट? बताओ। द करेक्ट आंसर इज PMLA। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ईडी का यूज किया जाता है और ईडी स्टैब्लिश भी PMLA के अंडर ही हुई है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, PMLA, that's very good. The Kerala High Court quashed the Nava Kerala Citizen Response Program primarily on the ground of Nava Kerala Citizen Response Program is quashed by Kerala High Court on the ground of violation of fundamental right, breach of separation of power, violation of rule of business and physical discipline, lack of legislative competence। इसको पढ़ना, ये वाला केस तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको पढ़ना कि ये क्या कहता है। ठीक है। Okay, the correct answer should be C. That is violation of rules, rule of business, and what we can say, fiscal discipline, है ना? So ये इस चीज को violate करता है, इसलिए उन्होंने इसको cost down किया। That is what it is. So थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना कि क्या कहता है, क्या changes उन्होंने डिस्क्राइब किए थे वगैरह वगैरह। Okay, the reciprocal deployment officer agreement between India and France relates to
दी रेसिप्रोकल डिप्लॉयमेंट ऑफिसर एग्रीमेंट फ्रांस और इंडिया के बीच है, किस चीज से रिलेटेड है? कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेड फैसिलिटेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन, क्लाइमेट रिसर्च। राइट, बताओ। कम ऑन। द करेक्ट आंसर शुड बी मिलिट्री कोऑपरेशन। दोनों साइड से मिलिट्री जो लीडरशिप होगी वो थोड़ा सा एक्सचेंज होगी, सो दैट उनके बीच में प्रॉपर डिस्कशन रहेगा। फैक्ट वॉशिंग। ओके। तुमने कभी वो सोचा है, मतलब लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो की है लोगों की या कंपनीज की, कभी सोचा हो इसके बारे में? तो मतलब मैं तुम्हें सिर्फ ये बात बोलूं कि फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम, बट देयर वाज दिस पर्टिकुलर कंपनी, है ना? चलो ले लेते हैं, एमवे करके कंपनी है, एंड वन ऑफ माय रिलेटिव केम टू माय हाउस सेइंग दैट दिस द कंपनीज प्रोडक्ट इज एक्सेप्शनल। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हम एक ही प्रोडक्ट को तीन चार अलग अलग जगह जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, मैंने कहा ठीक है भाई बताओ। तो ही सेड कि लुक एट दिस वॉशिंग पाउडर, सो फर्स्ट यू कैन वॉश द क्लोथ्स, ठीक है, व्हाट एन एक्सेप्शनल यूज ऑफ वॉशिंग पाउडर। देन से इसकी जो ये गंदा पानी है, इफ यू विल थ्रो दिस डर्टी वाटर इन द प्लांट्स, it will act like fertilizer. And I was like, dude, like washing soda, sodium carbonate mixed with water, and that is good for plant. That doesn't seems very chemistry. तो होता ये है कि there are people who actually provide some mislead advertisement, है ना? So that they can attract people, they can attract customer, investor is another thing, है ना? और ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम वो होता है, जो प्रोसीजर होता है, राइट, टू फैब्रिकेट, फैब्रिकेट नहीं, क्रिएट एंड फैब्रिकेट दोनों बोल सकते हो, अ पॉजिटिव सोशल, व्हाट वी कैन से, इन्वायरमेंट, मतलब उसके बाद फिर उसको ग्रीन वे में प्रेजेंट करना, ग्रीन वॉशिंग है, इम्पैक्ट वॉशिंग जिसको हम कहते हैं, राइट। तो ये जो है ये कहलाता है इम्पैक्ट। सो कि आप अपने फेवर में एक माहौल बना दो, एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग हो, सो इन्वेस्टर्स हो या कस्टमर्स हो, दे ऑल हैड बीन मिसलेड बाय दीज काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो है ये कहलाता है क्या? इम्पैक्ट वॉशिंग। अरे ब्रेन दो, ये जितने वो वाले होते हैं ना, क्या कहते हैं, एमएलएम वाले, पब्लिक जोड़ो स्कीम वाले, है ना, जो 2 महीने में बीएमडब्ल्यू लेने की ताकत रखते हैं, दे कैन डू एनीथिंग दक्ष। राइट। तो ये वही थे एक्चुअली, हमारे एक रिलेटिव थे, जो मैंने बोला ना कि आई वाज इन आई गेस 11th और 10th, 11th में था शायद। तो मैंने बोल भी दिया था, मैं चाची दैट डजंट लुक वेरी केमिस्ट्रिक। फिर पापा ने मुझे चुप कराया कि जाओ तुम चाय लेके आओ, पापा ने फिर इग्नोर किया, बट दैट्स ओके, दैट्स इम्पैक्ट वॉशिंग। So this is it from my side for today, and I'll see you tomorrow. And till then, I wish you and all your loved one a good health, good mental health. Life में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। See ya, guys. दक्ष, बहुत सारी चीजें हैं। ये कुछ ये इस टाइप की जो मार्केटिंग होती है ना, जिसमें देर आर सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी मार्केटिंग बैन है, बट उसके नाम पे दूसरे प्रोडक्ट वो कर सकते हो, जैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टबैको ब्रांड्स हैं या लिकर ब्रांड हैं, दे प्रमोट देयर सीरीज वाटर, सोडा वाटर, राइट, rather than promoting liquor directly.
तो ये वैसा ही पर्टिकुलर केस है. So I'll see you tomorrow.